हेलो एवरीवन। आज मेरा फिर मूड नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। पता नहीं क्या माइंड मेरा मूड ही नहीं करता आजकल वीडियो बनाने का। अब हो गए हैं 7:33 हो गए हैं रात के, तब हम वीडियो बना रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आज का हमारा जो है, डू नॉट ट्रस्ट योर माइंड। हैव यू एवर देखो यार, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मैंने ना जो पिछली वीडियो में मिस्टेक की है वो तैयारी ही नहीं की, क्योंकि पढ़ा ही नहीं जा रहा मेरा। अभी भी नहीं था, मैं ज़बरदस्ती आई हूँ माइंड को मना बना के कि चल चल चल। डू नॉट ट्रस्ट योर माइंड। हैव यू एवर मेड अ डिसीजन दैट सीम लॉजिकल? लुक बैक, वी आर वेरी लॉजिकल बींग। बींग जैसे ह्यूमन बींग होता है ना, वैसे बींग। बींग एवरी पर्सन क्रिएट दे ओन सोशली रियलिटी। रियलिटी द वे you view the world is complete subjective, because we all have congenitive cognitive uh, blashes नहीं बेसिस, सॉरी बेसिस, मुझे एल दिखाओ। बेसिस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव बेस वाज इंट्रोड्यूस इन 1972 बाय टू साइकोलॉजिस्ट, एमन्स टी वर्सकाई एंड डेनिल खैनेमन, पता नहीं क्या लिखा, डैनिंग खैमेन। A cognitive base is a system thinking error, the impact judgment, and therefore our decision. My favorite cognitive base is the attentional base. It's a science evidence for the idea that your life is a result of your thought. The attentional base states that our पानी बहुत ठंडा है मेरा। कहाँ गया? The attentional base state that our perception are affected by our thought, and naturally our perspection determine our action and decision, which make up our lives. If you have negative thought, you also have a negative perspection, मतलब perspection मतलब धारणा, perspection of life, that what it say. Our mind might be illogical, but it's also simple at the same time. Take one of most well known cognitive base, the confirmation base. It explain the behavior of con confirming and preconception. If you believe in something, you will try hard to find information, clue, and sign to back that up. In other words, you do everything to prove you are not wrong. Instead of looking at the facts, you look at beliefs, and that's what all cognitive base do. As of this writing, there are 106 decision making relative cognitive bases known. I have read about most of them, and I have read several books, and I study about cognitive base too. My conclusion is that your brain cannot be trusted. Maybe my conclusion is also a cognitive base. Who knows? What
it come down is this. What is comes down to in this? Avoid making decision based on belief. Observing पता नहीं obvious logic and evidence. Sorry, even scientists are also human beings. The mean they have their own cognitive base. They are the notorious पता नहीं क्या था notorious for finding evidence for their perception. The solution to make better decision is not more knowledge. Instead, I have found that a pragmatism and mental perspective lead to better information decision. Unfortunate, there's no such thing the best decision if that ये देख भटूरा कितना फुल्लिया देख पूरी है भटूरा को भटूरा है ओ पीता है कि नहीं पता नहीं भूल गया कल unfortunate there's no such a thing as the best. There's no fortune there's no such a thing as the best decision. If that was the case, we live in perfect world full of people who made logic and practical decision. I like a look at it this way. There are only good informed and bad informed decision. It very appealing to thinking we have got it all figured figure out because we have read few book or study. There's just one problem. You cannot trust your judgment no matter how much knowledge you have. Being aware of that simple thought help you make a better informed decision. Every time I am stuck in a thinking pattern, I try to break away by looking at the list of stuck in a thinking pattern. I try to break away by looking at the list of cognitive base. If free and easy, just go to the Wikipedia for list of cognitive base. You will find you'll find the most base seem like common sense, and that exact the point. Cognitive base explain our illogical behavior. अब कॉग्निटिव देखते हैं होता क्या है पहले बताओ. वो तो पढ़ना तो आ गया. कॉग्निटिव मीनिंग पता नहीं क्या लिखा. ज्ञान संबंध. अच्छा मतलब बुद्धिमान आदमी हो गया मान लो. कॉग्निटिव इंसान इंटेलिजेंट, जैसे साधु संत नहीं होते हैं वैसे ही, जिसमें जिनकी बुद्धि जागी होती, जिनकी आत्मा का मिलन हो गया होता है उनसे. कॉग्निटिव मेरे हिसाब से वही है जो सोचना, समझना और सीखना, याद रखना और निर्णय लेने जैसी मानसिक प्रक्रिया और ज्ञान से जुड़ी क्षमता को दर्शाता है. वही मतलब सेम ही है. थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो. वी कैच अप लेटर. Let's catch up tomorrow. Go. Bye.